This is a project of ZAMIN Academy. For personalized one-on-one tutoring, contact us by clicking the link in the video's description or our bio. Hello and welcome to ZAMIN Academy. ब्रिटिश काउंसिल ने एक प्राइज अनाउंस किया है जो कि वो हर ईयर करते हैं फॉर दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने आइल्स दिया और उनके बैंड जो है 5.5 मिनिमम 5.5 और उससे हाई जितने भी हो सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपको आइल्स देना होगा और आपका आइल्स जो है अप्रैल 1 से लेकर 31 अगस्त के दरमियान होना चाहिए। अप्रैल 1 2022 से लेकर 31 अगस्त 2023 के दरमियान होना चाहिए। अगर आपने इन डेट्स में आइल्स दिया है तो आप एलिजिबल हैं कि आप आइल्स के प्राइस के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकें। आइल्स के प्राइस की जो अमाउंट है वो ये देख सकते हैं कि आप 5000 पाउंड्स है फर्स्ट विनर की, सेकंड की है 2000 पाउंड्स और थर्ड की है 1000 पाउंड्स। और इसके अलावा आपकी ये पढ़ाई में भी हेल्प करते हैं, इनेबल्स स्टूडेंट टू स्टडी अब्रॉड। और ये जो है आपको प्राइस मिल सकता है सिंपली बाय क्रिएटिंग एन अकाउंट एंड रजिस्टरिंग योरसेल्फ एंड फिलिंग सम इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सिंपल से काम है। तो अगर आप इफ यू आर लकी वन यू कैन हैव दिस प्राइस। सो कुछ भी नहीं जाता अगर आपका अप्लाई कर लेंगे। सो बेटर कि आप इसको अप्लाई कर लें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और ये आपके सामने वीडियो के ऊपर भी आ रहा होगा। यू कैन क्लिक हियर एंड क्रिएट एन अकाउंट एंड स्टार्ट द एप्लीकेशन। तो ये मैं आ चुका हूँ अपने अकाउंट पे और सिंपल मैं अपनी इंफॉर्मेशन दूंगा यहाँ पे और स्पेशल रिक्वायरमेंट्स पे। देखिए ये सब काम मैंने कर लिए हैं तो मैं इसको बस नेक्स्ट करता जाऊंगा। आप इसको फिल कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। जो इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए यू कैन अप्लाई and there you are. You are just have to write your bands which you have achieved and simply upload the file and you can just click on next. Thirdly, you will have to tell them the educational background and then you will click on next. एजुकेशन में आप सबसे पहले वो क्वालिफिकेशन डालें जो आपने रिसेंटली और लेटेस्ट है आपकी, उसके बाद आप उसके बाद जो आपने किया उसको डालें एंड देन द थर्ड वन जो आपने उससे पहले की थी। सो दिस इज द वे टू इंक्लूड योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। इट्स वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा। यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ विदाउट एनी हेल्प। तो उसके बाद आप बताएंगे कि आपने किस प्रोग्राम को चूज करना है और यूनिवर्सिटीज के नेम्स वगैरह बताएंगे एंड then you will click on simply next. So be careful and be wise when you are choosing the country and the universities. And third, and at next step, you will have to do a personal statement. Okay, what have you done to support and improve your local community over the last year? So इसमें आपको कुछ information देनी होगी कि आपने किस तरह जो है कोई help किया। So ये आपको बता भी रहा है कि आप इसको आंसर कैसे करते हो। How you solved a problem, community initiatives. सो आप इसमें अपने मुताबिक एक आंसर दे सकते हैं। मैंने अपना एक आंसर दिया हुआ है एंड यू कैन चूज योरसेल्फ एज वेल। एंड इसके बाद जो है आपको सपोर्टिंग क्वेश्चंस कि आपका आइल्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा और इसके बाद आपने ये बताना है कि आइल्स जो है आपको किन गोल्स अचीव करने में मदद करेगा। thirdly आपको जो है बताना है कि किस कंट्री को आपने चूज किया और क्यों चूज किया। देन यू विल सिंपली क्लिक ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे मुझसे ये पूछेगा कि मैं आपको ईमेल भेज सकता हूँ। यस यू कैन सेंड मी एंड दिस यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। प्लीज डू नोटिस कि आप इसको यस क्लिक करें। समटाइम्स दे सेंड प्रमोशनल ईमेल्स बट many a times the emails are related to your price. Okay, so you can see यहाँ पे आपको बता रहा है कि 5000 pounds आपको मिल सकते हैं या फिर 2000 pounds या 1000 pounds if you are the winner, and there will be only one winner for each side. ओके, श्रीलंका में जी 5000 के 1 विनर होगा और 2000 पाउंड के 3 एंड 1000 पाउंड के 5। Well, they give more to those countries because they are less privileged or less developed. ओके, ये आपकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई है, हम इसको पढ़ लेते हैं कि इसका लॉन्च डेट यानी कि जो स्टार्ट हो गया रजिस्ट्रेशन करना तो 15 जून है। आपने आइल्स देना होगा
1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त आपने दे रखा होगा क्योंकि दिस इज द लास्ट डेट्स एक्चुअली। सो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका एकेडमिक ईयर जो है वो स्टार्ट हो चुका हो या होने वाला हो, यू कैन डू दैट। फेज 1 एप्लीकेशन जो है 15 सितंबर तक है। विनर आर शॉर्टलिस्टेड टिल 30 सितंबर, सो बी क्विक इन अप्लाइंग। फेज 2 भी इसका आएगा, यस, जिसमें आप जो है दोबारा एप्लीकेशन डाल सकेंगे, विच आई डोंट नो अबाउट। वो आप इसकी वेबसाइट को चेक करके भी नोटिस कर सकते हैं, और उसका विनर जो है 31 अगस्त को बताया जाएगा। एंड वेल दैट्स इट। और आपको पेमेंट जो है दिसंबर के एंड तक आ जाएगी इफ यू आर द लकी वन। सो आई हैव रेड दिस, और मैं इसको जो है क्लिक करके नेक्स्ट कर दूंगा। ओके जी, यहाँ पे मुझे ऑथराइजेशन देनी है इनको, अपना नाम जो है कैपिटल लेटर्स में लिख के। ओके जी, डू रिमेम्बर कि आप जो है ये एप्लीकेशन, डू रिमेम्बर कि ये जो है आप एप्लीकेशन 15 से पहले सबमिट करें। प्लीज डू दैट बिफोर 15 और आपका आइल्स जो है 31 अगस्त या 31 अगस्त से पहले का होना चाहिए। सो don't beat around the bush and please keep in mind the deadline is 15 September। सो हम इसको नेक्स्ट करते हैं एंड देन इट विल गिव अस द समरी, जिसको हम एक मरतबा व्यू कर लेते हैं तो क्या है। एंड देन recent photograph given them। ओके जी, आइल्स की पिन को मैंने कॉपी दे दी है। एंड दैट्स इट आई गेस। लेट्स चेक वंस अगेन, अगर हमने इसमें कुछ एडिशन करना है। we're off to go। ओके जी, पिक भी अपलोडेड है और पासपोर्ट भी। ओके, we'll go to the summary again। ओके जी, अब इसको जो है हम सिंपली सबमिट कर देंगे with giving our names and the addresses। बटन क्लिक करना है and your application is done, boom। So meanwhile you can read more about the IELTS prize। जब वो रिलीज होगा तो आपको ईमेल आ जाएगी if you are the lucky winner, and British Council will email you when the results are announced। So good luck, thanks so much for watching, and I'll see you in the next video। Goodbye। Thank you for watching. Book your free demo lecture now. For more free videos, support us by subscribing to this channel.